हम सबका एक कॉमन ड्रीम है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। रोज की ये भाग दौड़ हम सब इसलिए तो करते हैं ताकि अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएं। बट फ्रॉम वेयर डू वी बिगिन? किस में इन्वेस्ट करें? कौन से फंड्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? ऐसे बहुत क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। डोंट वरी, वी गॉट यू। हेलो एंड वेलकम टू IND लर्न। इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग, इंश्योरेंस या टैक्सेशन, वी हैव 5-minute कोर्सेज पर्सनल फाइनेंस के कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। ब्रिंगिंग टू यू IND लर्न, जहां आप 5 minutes में फ्री फाइनेंशियल कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं एंड ऑल्सो गेट सर्टिफाइड, दैट टू फॉर फ्री। इस कोर्स में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट आर इंडेक्स फंड्स एंड टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड्स, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So let's jump to our last lesson for this course, how to invest in index funds. Also, course complete करके अपना सर्टिफिकेट लेना मत भूलना। The course link is in the description below. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिव्यू करिए अपने फाइनेंसेस एंड गोल्स को, as this will help you establish an investment plan. इन्वेस्ट करने से पहले अपने लाइफ गोल्स क्लियर रखिए। आपको कब रिटायर होना है एंड उस माइलस्टोन से आप कितनी दूर हैं? आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है एंड बजट वाइज हाउ डू यू लुक? अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू recognize the role of index funds in your life and how to invest in them. Then as next step, clearly define your investment objectives, whether it's funding for education or purchasing a home. Additionally, find the right balance tailored to your risk tolerance and goals for optimal performance. इसलिए allocate your assets across different asset classes like stocks, bonds or real estate. Second, select an index fund. When it comes to investing in index funds, choose the right fund जो आपके financial goals and risk tolerance के साथ align करे. Here are some essential factors to consider. First being evaluating expense ratios and tracking error. एक्सपेंस रेशियोज बेसिकली एनुअल फीस है जो फंड मैनेजर्स चार्ज करते हैं, जिससे आपके रिटर्न्स डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। अगर ये कम होगा तो आप अपने इन्वेस्टमेंट गेन्स का ज्यादा पोर्शन रख पाओगे। एडिशनली, ट्रैकिंग एरर इंडिकेट्स कि हाउ क्लोजली द फंड मिरर इट्स अंडरलाइंग इंडेक्स। अगर ये एरर कम होगा तो इट विल सिग्निफाई बेटर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी। सेकंड, एग्जामिनिंग द फंड्स मेथोडोलॉजी एंड इंडेक्स रेप्लिकेशन। हर इंडेक्स फंड एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है फॉर सिलेक्टिंग इट्स एसेट्स। अब ये जानने के लिए कि कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट फिट है, फंड की अप्रोच को समझना एंड इट्स अधेरेंस टू द इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर में हमने इंडेक्स फंड्स के डिफरेंट टाइप्स समझे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हेड इन द डिस्क्रिप्शन नाउ, क्योंकि आवर थर्ड पॉइंट इज टू डिसाइड व्हिच इंडेक्स फंड्स यू वांट टू इन्वेस्ट इन। हर फंड एंड फंड कंपनी की फीस एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अलग हो सकती है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिसर्च द डिफरेंसेस बिटवीन ईच। अ गुड वे टू स्टार्ट कैन बी टू रिसर्च द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ अ गिवन इंडेक्स फंड, the fee structure, the ease of trading and access to the fund, and the background of the managers in charge of the given fund. Fourth, tax considerations and efficiency. Understanding the tax implications of your investments can significantly impact your overall returns. Now, compared to actively managed funds, index funds generally have lower turnover rates, resulting in fewer taxable events. But still, it's essential to be aware of potential tax liabilities when selling shares. Also, index funds pass on capital gains and dividends to their investors. इसलिए ये समझना भी important है कि how these distributions can affect your tax liability and overall returns. Fifth, monitoring and evaluating index funds performance. अपने इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। लुक एट मेट्रिक्स जैसे द फंड्स टोटल रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर। इनको बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करिए एंड यू विल गेट वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू योर फंड्स परफॉर्मेंस। बट रिमेंबर कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर बिल्डिंग वेल्थ एंड अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स। तो अगर आप सही फंड चूज करते हैं, सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्ड करते हैं, टैक्स इम्प्लीकेशंस को समझते हैं एंड फंड की परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं, तो यू कैन एनहांस योर चांसेस ऑफ सक्सेस इन द मार्केट। एंड विद दैट इट्स अ रैप।
हम उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। द कोर्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जस्ट कंप्लीट अ सिंपल क्विज, आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस इन 5 मिनट्स एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। There are over 15 financial courses that you can learn for free and grab your certificates. 4 lakh people have already taken these courses and we would love for you to grow your financial knowledge with your friends and family on IND Learn. The course link is in the pinned comment and description below. Still have a few questions or want to know more about index funds? Tell us in the comment section below and subscribe to our channel. We will see you in the next one.